Now today we are going to continue the same chapter, that is basic computer organization. See page number 3. Now on page number 3, yesterday I have told you about the basic organization of computer and we were discussing the functional units of computer. So yesterday I have told you about input unit. Now today we will learn what is output unit. Output unit is formed by the output devices attached to the computer. If we are talking about any input or output device, all are attached with a CPU because CPU is the main part of computer which helps in processing. So after processing and before processing we need memory, input unit and output unit. So what the output unit does? Output unit, whatever data is processed by CPU, it retrieves it and present in the form of soft copy or hard copy. The output coming from CPU is in the form of electronic binary signals which needs conversion in some form, because you know computer understands only machine language, so it processes also into the form of 0 and 1. So after processing, what it does, output devices converts the binary code into the human readable form which we can understand. So this is done by output unit to display the information. Now see, some popular output devices are monitor. You know, monitor is the most common form of output from a computer. It displays on the screen. It is just like a television. And the picture on a monitor is made up of thousands of tiny colored dots called pixels. You know, pixels kya hote hain? These are the very small dots, very small dots which you cannot see from with a naked eye. And जो भी आप पिक्चर्स या टेक्स्ट देखते हो स्क्रीन पे, it is made up of very small dots. So it is done by monitor, and monitor shows you soft copy because whatever you see on the screen, that is soft copy. Printers are the devices that deliver information by means of printed characters on paper. Means if you want to take the printout on a paper or either on any type of sheet, that is called hard copy. So if you want the output in the printed form, you go for printer or plotter. Now speakers help us to play the music, play the sound. So they receive the sound in the form of electric current from the sound card. Yesterday I have told you that it needs a special card that is called sound card. It is a special hardware which helps us to record the sound and to play the sound. So it also converts the electric current into the sound format which can be easily understandable by the user or audible to the user. Now next functional unit is CPU, Central Processing Unit. Processing means conversion of input into output. It is the main control center and processing unit. It is also called the brain of computer as it guides, directs, controls and governs the performance of a computer. Means, you know, it is just like the master of a computer, or we can say it is the head of a computer. As in our school, principal is the head. If we are talking about any country, their prime minister and president are the head, and without their supervision we cannot do any single work. In the same way, in CPU also is the main or we can say it is the coordinator which gives signals to all the chips, circuits and devices. Without its signals, no chip, circuit or device can do any work. Now it has some subcomponents like ALU, control unit and registers. Registers भी एक तरह की memory होती है, ठीक है. Memory का काम क्या होता है? To hold the data. Now see what is arithmetical and logical unit. Arithmetic means which can perform arithmetic operations. Arithmetic operations होते हैं, वैसे इसमें 4 types के दिए हैं but 5 types के होते हैं. When you will learn Python, you will come to know addition, subtraction. This star sign is known as multiplication sign. This slash sign is known as division sign which help us to divide. And one more sign जो percentage का sign होता है उसको हम modulus sign कहते हैं. That modulus sign help us to check the remainder. And logical operators क्या होते हैं? Which when we have multiple conditions, जब हमें comparison करना होता है, when we have so many conditions, when we have to choose a single condition among the multiple conditions, we make the use of logical operators like less than, greater than, is equal to, not equal to.
So these are known as logical operators. So what is the function of arithmetical and logical unit? It helps us to do calculations and it also helps us to do comparison. And when we put these logical operators, we get the answer in either true or false. Now see the next page, that is second is control unit. It controls, as name suggests, controls and guides the interpretation, flow and manipulation of all data. When you give the instructions through input device, where these instructions will go, where it will be stored, what type of chip it processed it, how it is processed, what does it require. So these all things are decided by control unit. It gives the signals and accordingly operation is done by all the devices. The CU send control signals until the required operations are done properly by ALU and memory. Means it is just like the head. Without its signals, no device can even do a single task. It is also responsible to carry out all the instructions from the memory and to the memory. As you know, memory is required. Memory क्यों चाहिए होती है? Because when we put the data, when we are putting the data into the computer through input devices, to hold it for temporary time, for some time, we need also memory. ठीक है, and after processing also it needs memory. So before execution, during execution and after execution it requires memory. So it also gives instructions to the memory for how much time and it requires to be keep it in memory. Now next is registers. Registers are the small units. I have told you it is just like a memory unit, but इसको हम अलग से क्यों consider करते हैं? Because registers, you know, they can hold a very small unit of data. Means it can hold the data in the form of 0 and 1, single bit, 1 bit only. At a time it can hold only 1 bit. So it uses registers to temporarily hold some important processing, क्योंकि जब processing होती है तो processing के time भी हमें डाटा को होल्ड करके रखना पड़ता है और वो एक एक सिंगल बिट करके वो उस रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता जाता है और प्रोसेसिंग होती जाती है. तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हमें क्या चाहिए? रजिस्टर्स. सो रजिस्टर्स का काम क्या है? इट होल्ड्स द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. इट मीन्स स्टोर सम पार्ट और सम मेमोरी एड्रेस और सम इंस्ट्रक्शन इट्स प्रोसेसिंग रजिस्टर्स. क्योंकि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग की, तो जो भी डाटा है वो उसका एड्रेस होता है. ठीक है, हर डाटा का एड्रेस होता है कि वो किस पर्टिकुलर चिप में, सर्किट में या रजिस्टर में स्टोर है. तो उस डाटा के अकॉर्डिंग उसको जो कंप्यूटर होता है वो सिग्नल्स पास करता है. नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट. द फोर्थ यूनिट इज मेमोरी यूनिट. एज यू नो, मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, टेम्परेरी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी. टेम्परेरी मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी और जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. अब मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? वाई टेम्परेरी मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी? लेट मी टेल यू. जो मेन मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं. एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम. अब रैम का काम क्या है? रैम हेल्प अस टू होल्ड द डाटा फॉर टेम्परेरी टाइम. इट इज़, आपने इंटरनल मेमोरी देखी होगी, जैसे आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होती है. आप कहते हो ना कि इसकी इंटरनल मेमोरी कम है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एबल टू होल्ड अ लार्ज फाइल, या उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है. तो जब भी हम कंप्यूटर पे कोई वर्क करते हैं या कोई फाइल एक्सेस करते हैं या कुछ हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कोई भी XYZ काम करते हैं, तो एट दैट टाइम रैम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे आपको बुक रख के पढ़ना है, तो आप बुक पढ़ोगे तो उसको आप किसी टेबल पे रखोगे, तो उस टेबल का साइज क्या होना चाहिए? बुक से बड़ा होना चाहिए. देन ओनली दैट टेबल कैन होल्ड योर बुक. या अलमीरा की अगर हम बात करें, तो अलमीरा में जितना बड़ा साइज़ होगा अलमीरा का, आप उतना ज़्यादा उसमें सामान रख सकते हो. ठीक है, तो वैसे ही रैम होती है. अब कंप्यूटर की स्पीड रैम पे क्यों डिपेंड होती है? कि अगर आपके रैम का साइज़ कम है, इंटरनल मेमोरी का साइज़ कम है और आप उसमें बड़ी से बड़ी फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स को पुट करने की कोशिश करोगे, होल्ड करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? नेचुरली स्पीड विल बिकम वेरी वेरी स्लो. तो जितना अच्छा साइज़ होगा, जितना बड़ा साइज़ होगा इंटरनल मेमोरी का, उतना ज़्यादा डाटा आप स्टोर कर सकते हो और आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो भी फास्ट होगी.
तो बिना रैम के हम एक सिंगल फाइल को भी एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको कहते हैं मेन मेमोरी। दूसरी चिप है रोम।